Assalamu alaikum. I'm Yasir Akbar and you are watching Study Page. This is the first part of this lecture. In this whole lecture, we will study about the web icons and fonts. Means how will we use icons and fonts in our web design or HTML pages. So first of all, let's introduce the web icons. What means by an icon? So icon are graphical symbols on computer display screen that represent an app, an object such as a file or a function such as a command to solve etc. ठीक है, तो इस किस्म के जो हमारे पास ग्राफिकल सिंबल्स होते हैं इनको कहते हैं आइकन्स. For example, this is an icon. Most of the time, this icon represent the home page in a website. This is an icon that represent location. This is an icon that represent most of the time an email. This icon represent a web address, and this represent a phone number or contact, etc. So icon हमारे पास वो symbols होते हैं जो कि या तो किसी सॉफ्टवेयर वगैरह को रिप्रेजेंट करते हैं या किसी फाइल वगैरह या किसी फंक्शन या किसी ऑब्जेक्ट एट्सेट्रा. तो इनके लिए जो हमारे पास सिंबल्स यूज़ होते हैं these symbols are called icons. अभी इन सिंबल को हम किस तरह यूज़ करेंगे. सो हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, मल्टीपल बल्कि बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस हैं. टू ऐड आइकन इन वेब पेज देयर एग्जिस्ट लॉट्स ऑफ ऑप्शंस. एज जो हमारे पास सबसे पॉपुलर ऑप्शंस है दीज इंक्लूड बूटस्ट्रैप आइकन्स. बूटस्ट्रैप जो हमने फ्रेमवर्क पढ़ा है उसमें भी आइकन्स है. सबसे पहले हम ये देखेंगे द सेकंड मोस्ट पॉपुलर आइकन लाइब्रेरी इज़ द फॉन्ट आसम. ये हमारे पास एक और लाइब्रेरी है गूगल मटेरियल आइकन. गूगल भी हमें आइकन प्रोवाइड करता है. ठीक है, icon8.com, flaticon.com एंड सो ऑन, बहुत से ज़्यादा है. लेकिन इनमें से हम सिर्फ फर्स्ट 3 कवर करेंगे. ठीक है, बूटस्ट्रैप आइकन, फॉन्ट आसम और गूगल मटेरियल आइकन. द मोस्ट पॉपुलर ऑफ दीज 3 इज़ द फॉन्ट आसम. ये फॉन्ट आसम आइकन जो है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और तकरीबन हर वेबसाइट में ये यूज़ होता है. इसके अलावा अगर आप लोग बूटस्ट्रैप आइकन यूज़ करना चाहते हैं वो भी हम देखेंगे और मटेरियल आइकन भी देखेंगे. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. दिस इज़ अ न्यू लेक्चर, सो कीप वॉचिंग. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.